मैट्रिक्स मैच से स्टार्ट करते हैं. ऑप्शन नंबर 1. So option A है so if A is this matrix is inverse of this matrix, value of x is okay. इसका इन्वर्स ये है. वेट इसका मतलब कि इसका इन्वर्स ये होगा. सो इसका बस इन्वर्स अपन ढूंढ सकते हैं आराम से. नो बिग डील. या कोई स्पेशल मैट्रिक्स नहीं है, नॉर्मल कुछ भी दे दिया. एनीवे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल को फैक्टर मैट्रिक्स ढूंढो. सो वो करने के लिए ऑफ कोर्स तुम इसको लिखूंगा मैं एक और बार. 2 7 0 1 और इसके कुछ रोज में वापस रिपीट कर दूंगा. सो लाइक 2 0 1 0 1 -2 और 2 0 7 2 0 and 0 1 0 0 1. well whatever, once we have this, अब क्या है, अब तो कोफैक्टर मैट्रिक्स इजीली हो जाएगी. सो बोल रहा हूँ इजीली हो जाएगी. मोस्ट लाइकली मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक्स होगी कि मुझे ये सब पसंद नहीं है. एनीवे, सो पहले एलिमेंट के लिए वाला माइनर. सो 1 एंड देन इसी तो 0 हो गया. फिर फर्स्ट आएगा यहाँ पे 1. देन इसके लिए ये वाला. सो ये तो वैसे ही 0 हो गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा. इसके लिए ये वाला. सो माइनस ओके वो 0 हो गया. -1. इसके लिए देखते हैं. सो -14 फिर 0 फिर माइनस जस्ट -14. यस. फिर इसके लिए ये चीज. सो 2 -7 विच शुड बी -5. वेट ऐसी करते हैं. हाँ ऑफ कोर्स यू नो उसका जो माइनर रहता है वो वहां पे डालना है. इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है इनफैक्ट. राइट. या इस टाइप से फैक्टर मैट्रिक्स होते हैं. ओ क्या करता है सेकेंड वाले के लिए -5. फिर इस वाले के लिए क्या हो जाएगा 4. देन इस वाले के लिए क्या -7 आई थिंक. फॉर दिस गाय इसमें भी 0. इसके लिए 2. सो या ये चीज आ गई. राइट. बट तुम लोग हाँ बाय द वे ये सिर्फ कोफैक्टर मैट्रिक्स है. अपने को बस इसका ट्रांसपोज देना पड़ेगा. राइट. सो 1 -14 -7 फिर यहाँ पे आ जाएगा 0 -5 0 एंड -1 4 2. ये सब हो गया. फिर अपने को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है a के. सो डिटर्मिनेंट इतना मुश्किल नहीं हो सकता है. देखते क्या होता है. सो अपन ऑलरेडी कोफैक्टर्स ढूंढ चुके हैं. राइट. सो 2 का कोफैक्टर 1 हो जाएगा. सो 2 एंड देन प्लस 0 का कोफैक्टर 0 स्टिल 0. फिर 7 का कोफैक्टर -1 वहाँ पे पुट कर दो. सो -7 एंड देन यू जस्ट गेट -5 एज द थिंग. सो डिवाइड करो उससे 1/-5 बिकॉज एडजॉइंट ऑफ a टाइम्स a रहता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ a रहता है. सो एक्चुअली डिटर्मिनेंट ऑफ a से डिवाइड करने मतलब एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a दैट विल बी द इनवर्स मैट्रिक्स. राइट. सो ये हो जाएगा. ओके और यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली है. राइट. सो 0 1 0 दिस विल बी -1/5. ठीक है. फिर समझ आ रहा है ना कि x शुड बी 1/5. या और ये भी आराम से हो जाएगा. लाइक जस्ट 14/5 एंड देन 7/5. सो x शुड बी जस्ट 1/5 व्हाटएवर. राइट. ये वाला करने की जरूरत भी नहीं है क्या. या ऑफ कोर्स सेम. सो देयर वी गो. सो a का क्या है x वैल्यू इज जस्ट 1/5 व्हिच इज q. सो a का q. a का q. okay b का if a is this thing then a cubed. right. इसका determinant is just 125. wait but isn't like determinant of a determinant of a determinant of a basically. तो इसका determinant उसका cube. हाँ determinant of a basically 5 है ऐसा बोल रहा हूँ. so it's like alpha square minus 4 is equal to 5. so yeah alpha is just ±3. so b का q sorry b का p. ये p है ना. राइट. c के लिए क्या होगा. Okay, if A, B, C are three complex numbers such that a square plus b square plus c square equal to 0, okay, this determinant is so b square plus c square है यहाँ पे. but यहाँ पे okay, so इसको minus a square लिख सकता हूँ. right. oh so it's like minus a squared and you got a b a c फिर यहाँ पे आ जाएगा a b and a c and माइनस बी स्क्वायर्ड माइनस सी स्क्वायर्ड. यहाँ पे आएगा बी सी. यहाँ पे आएगा बी सी. अब तो ऑफकोर्स कुछ चीज़ें तुम कॉमन निकाल सकते हो. सो इसमें सब कुछ इसमें ए है हर जगह पे. इसमें बी है हर जगह पे. इसमें सी है. सो ए बी सी बाहर निकाल लिया. दिस विल जस्ट बी माइनस ए बी सी. देन यहाँ से बी बाहर निकाला है. सो ए माइनस बी सी और यहाँ पे ए बी माइनस सी आ जाएगा. राइट.
या तो अब क्या, इसमें से c बाहर निकालो, उसमें से b इसमें से, सो इनफैक्ट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, देन जिसका माइनस 1 1 1 1 minus 1 1 and then 1 1 minus 1 whatever. अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट? सो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, लेट्स जस्ट से इसको इसमें ऐड कर देता हूँ। सो 0 0 2 1 माइनस 1 1 blah. अच्छी बात ये कि ये दोनों जीरो होगा तो अपन सिर्फ इसका कर सकते हैं, सो 2 पॉजिटिव आने वाला है, सो 2 टाइम्स 1 minus of minus 1 is plus 1, so 4, ये सब 4 आएगा, so k should be 4 in that case. So c का s, okay, d का, if f of theta is this thing then f of 2 pi, come on seriously, ये तो पूरा दिया ही क्यों डायरेक्टली, तो वही नंबर दे देते मुझे, 2 pi upon 3 पुट करो इसमें, so 2 pi upon 3, wait इसमें ऐसा क्यों दिया है, okay, wait a second, साइन नेगेटिव कोसाइन कोसाइन 0, ओह ओके ओके ओके, मतलब ऑलमोस्ट नहीं डायगोनल एलिमेंट फिर 0 लगेगा ना अगर इसको एंटीसिमेट्रिक करना है अपने को, विच इज नॉट हैपनिंग देयर, सो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट पुट दैट देयर। ये बहुत लंबा हो जाएगा ना, राइट? 2 पाई अपॉन 3, सो कोसाइन क्या होता है, नेगेटिव 1 अपॉन, करना ही पड़ेगा सिर्फ 1 अपॉन 4, then this will just be negative square root 3 upon 2, then you got minus, sorry, upon 4, then minus square root 3 upon 2, और ये तो इन्हें तो बस चलते ही जाएगा इस टाइप से, कुछ और नहीं कर सकते क्या यहाँ पे? come on think, कुछ ऐसा कि ये you know हाँ करते आता तो अपन जो भी है कैलकुलेट करना है अपने को, कोसाइन थीटा साइन थीटा, दैट विल बी राइट, ये चीज, सो नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4, फिर साइन स्क्वायर थीटा विच इज 3 अपॉन 4, यहाँ पे कोसाइन थीटा विच इज लाइक 1 अपॉन नेगेटिव 1 अपॉन 2, सॉरी या ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, और फिर यार कुछ और इसमें अच्छा कर पाते तो कितना, मतलब वॉट एवर, ओके, और फिर यहाँ पे ओके सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं, 1/4 हजार से कॉमन निकाल लेते हैं, सो यहाँ से एक बार यहाँ से 1/4 आएगा, यहाँ से 1/4 आएगा, ऐसे 1/2 निकालेंगे बाहर, सो बेसिकली तुम 1/32 बाहर निकाल लो, एंड देन यू गॉट 1 नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 नेगेटिव स्क्वायर रूट नेगेटिव 2 स्क्वायर रूट 3, सॉरी, you got negative square root 3 and minus 2, और यहाँ से आ जाएगा square root 3 and 1 and 0, राइट? इन दी एंड बहुत सारे कैलकुलेशन है ये, नॉट नाइस। और यहाँ से 2 बाहर आ रहा है, सो वो बाहर निकालो ना, सो ये माइनस माइनस आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 16, ओके दैट्स नाइस। ठीक है, राइट, अब इसके बाद क्या, इसके बाद सिंप्लीफाई मुझे करना है, कैसे? ओ वेट, यहाँ पे क्या था वैसे, 1, ओके ठीक है जो भी, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, हाउ? ये 0 है, इसका क्या मैं कोई टाइप का यूज कर सकता हूँ? वेट, अगर मैं इसको स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करूँ और फिर इसमें ऐड कर डालूँ, सो इट्स लाइक 4 0 नेगेटिव स्क्वायर, आइडिया अच्छा है, क्या है प्रैक्टिकल एक्चुअली यूजफुल रहेगा, आई डोंट नो, लेट्स ट्राई इट आउट। सो 1/16, यहाँ पे स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई किया इस पूरे इसको और ऐड किया पहले इसमें, सो दिस विल बी 4 0 नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 3 नेगेटिव 1 स्क्वायर रूट 3 1 0 जो भी है। ओ अच्छा, ये भी जो है वो बहुत ही अच्छे टाइप के दे दिए, सो इसको इसमें ऐड कर दिया 1/16 गेट 4 0 0 3 नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 नेगेटिव 1 0 स्क्वायर रूट 3 1। अच्छी बात ये है कि अपने को ये वाला कमेंट अपने काम नहीं करना, राइट? Come on. अच्छा कुछ अच्छा, और if I do this times square root इसमें ऐड किया तो नहीं यार, वो अपन मतलब वो बहुत अननेसेसरी जैसा हो जाएगा, राइट? ओके फाइन, अब जस्ट कैलकुलेट कर लो इसको, इतना भी हार्ड नहीं है। सो क्या 1/16 टाइम्स 4 पहले तो, फिर ये सब मतलब कि जस्ट 4 आ जाएगा, फिर क्या
ये तो गया वैसे भी, एंड देन माइनस स्क्वायर रूट 3 और ये चीज, सो 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 बेसिकली। नहीं, इसमें अपने को स्क्वायर रूट 3 वगैरह मिलने वाला है, विच इज नॉट गुड। ओह नो, इट्स नॉट गुड, कुछ तो भी गलत हो गया अपना फिर। बस ऐसा यूजुअली होना तो नहीं चाहिए, राइट? या दैट्स अंडरस्टैंडेबल, फाइन। बट ये कैसे हुआ आखिर? अच्छा, अपन ने सब कुछ ट्राई कर लिया, कौन सा बचा है फिर डी के लिए? सो पी, क्यू, क्यू पी एस और हो तो हो चुके, सो ये सब कुछ हो गया, तो ये वन होना चाहिए, राइट? हाउ इज दिस गोइंग टू बी वन दो? क्योंकि ये तो मुझे दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ होते हुए। अपन ने इसके लिए किया, फर्स्ट आई मीन, ओह ओके ओके वेट, जब अपन ने ये इसमें अपन ने इसमें ऐड किया था ना, राइट? इट शुड नॉट हैव बीन लाइक दिस देन। अच्छा, ये तो स्टिल वैसा ही रहेगा क्योंकि वो, हाँ, बट ये हो जाएगा 4 इन दैट केस, ओके, एज इफ इट मेक्स अ डिफरेंस। अभी भी उतना ही खराब है ये। हम्म, ये zeros, this square root 3 is gonna be like, ओह अच्छा, मैं गलत माइनर सॉल्व कर रहा था अभी तक। क्या किया मैंने, क्यों किया आखिर? ओके, तो दो दिन गलतियां हुई। पहले तो ये ऐड करके अपने को ये चीज मिलेगी, राइट? स्टिल अपन एक बार वापस पूरा चेक कर लेते हैं। जैसे थिंग इस पे तो मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि या और क्या हो सकता है। ओके, फिर अपन ने क्या किया, अपन ने 1/4 बाहर निकाला, 1/4 बाहर निकाला, 1/2, सो 1/32 आ गया। और फिर जो मैट्रिक्स आई थी, राइट, उसमें से यहाँ से 2 बाहर निकाला, सो 1/16 हो गया, और फिर फाइनली अपने को ये मिल गया, राइट? यस। उसके बाद क्या, उसके बाद हमने, राइट, सिंप्लीफाई करने का ट्राई किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डिड, स्क्वायर 3 टाइम्स ये सारी चीज, राइट, वो इस पे ऐड कर दिया। यस। सो उससे यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 0 आ गया, राइट? स्टिल नेगेटिव स्क्वायर 3 वॉट एवर, या फिर अपन ने इसमें ऐड किया, सो 0 4 नेगेटिव 1 0, यस यस यस, इनफैक्ट। और फिर क्या कैलकुलेशन करना है, सो 4 फिर, या लाइक इट्स ओनली, वेट, 4 4 टाइम्स 0, हाँ, यहाँ पे कैसे 4 आया फिर? व्हाट? नहीं, ये सब सही नहीं है, डोंट डू इट लाइक दैट। 4, ओके, फिर ये माइनर, सो 4 0, ओके, देन यहाँ पे 1 आ जाएगा, ओके, फिर ये तो है ही नहीं, यहाँ पे नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 है, और वैसे ही वो पॉजिटिव होने वाला है, लाइक ओके, नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 एंड देन ये माइनर, सो इसमें पहले तो 0 आएगा, उसके बाद में माइनस 4 स्क्वायर रूट 3, ओके, यस, इट विल बी एन इंटीजर, आई थिंक नाउ वी कैन डू इट। सो 1/16, 4 तो बाहर आ जाएगा, सो 1/4, you got 1 plus 3 basically, so 1 is the answer, right? So it's going to be answer. Yeah, it's going to be R. Next, second question. Okay, second question is, if 2 sine x, sine 2x and 2 cosine x are in AB, then the value of sine x plus cosine x is, so unka mod, huh? 2 sine x, sine 2x and 2 cosine x. Sine 2x is like 2 sine x cosine x. Ooh, these are in AP. Okay, it's like saying sine x cosine x, more like 2 times of that. That's equal to sine x plus cosine x, right? Yeah. Well, okay. Look. Um, the thing is, इसको मैं sin 2x बोल रहा हूँ. It's equal to sin x plus cosine x. अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ दोनों साइड, sin squared of x is equal to 1 plus sin 2x. Yeah. So like sin squared 2x minus sin 2x minus 1 equal to 0, right? So wait, and you just want this thing. Oh yeah. फिर ये सब करो ही मत ना, साइन प्लस को साइन को तुम क्या u बोल दो, सो u इज इक्वल टू, एंड तुमने अभी देखा कि स्क्वायर करने में क्या होता है, सो इट्स बी u स्क्वायर माइनस 1, राइट? सो u स्क्वायर माइनस u माइनस 1 इज इक्वल टू 0, हाँ, दैट वर्क्स आई गेस। या अब क्या जस्ट उसको सॉल्व कर दो, लाइक 1 प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ b स्क्वायर 1 एंड देन 4 प्लस 1 5 अपॉन 2, सो अपने को मॉड चाहिए, या वेट, ओके, इससे दो चीजें हो सकती है, ओके ठीक है, एक ही ऑप्शन में
like whatever. So there we go. Right, 1 minus square root 5 upon 2, वो वाली जो चीज थी. Right, so 1 plus square root 5 upon 2, that will be sin x plus cosine x. Maximum value क्या होती है इसकी? Square root 2. But I think 1 plus square root 5 upon 2 is bigger than square root 2 because square root 5 is bigger. Square root 5 plus 1 is bigger than 2 square root 2 because 6 plus 2 square root 5 is bigger than 8 because 3 plus square root 5 is bigger than 4 yani square root 5 is bigger than 1, which yes is true. So right, so दूसरा वाला जो रूट रहेगा वो रेंज के बाहर है. That's why only correct option is P. फिर वही है सिर्फ यहाँ पे. So A का P. Okay, B. If the angle of triangles are in AB with the common difference equal to 1 upon 3 of the greatest angle. Okay, common difference is 1/3 of the greatest angle. So let's think 30 60 90 वही एक तरीका है. बीच का तो 60 होने वाला है और जो भी ग्रेटेस्ट एंगल रहने वाला है 60 प्लस d, उसका 1/3 जो है दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू d. सो यहाँ से एक ही वैल्यू मिलती है दैट these should be 30, right? Okay, ratio of the two largest sides is so ये of course 60 90 30 वाला ट्राइंगल है. सपोज ये 1 है, देन ये 60 होगा, ये 1/2 हो जाएगा. इसका भी स्क्वायर 3/2. ये बड़ी साइड है, ये बड़ी साइड है, तो इनका रेशियो स्क्वायर 3/2 which is q. so b का q. c करते हैं. Okay, let the sides A, B, B, C, C, D, A of a cyclic quadrilateral A, B, C, D are in GB with common ratio 2. And value of P, BD upon AB is sides BD. Isn't that the diagonal? Right. Oh wait, Ptolemy's theorem. Yeah, वही कहते हैं ना उसको. Yes, Ptolemy's theorem. Yes. Wait, and that was just like कि diagonals का product जो है वो it's a sum of the products of opposite sides, right? So suppose तुम्हारा तुम्हारा जो मुझे उसका प्रूफ यार मुझे याद नहीं आता, इसलिए जो याद कर मैं बता देता हूँ. Anyway, the thing is like अगर मैं ऐसा A B C D like this, I know उसमें दिया नहीं है but just for understanding, yeah. और I don't know ये length L M बोल दो इसको, इस लेंथ और इस लेंथ को तुम N बोल दो. So M times N that will be equal to AB plus CD. That's Ptolemy's theorem. So wait, think about it. M times N, what is that? So M is just ये चीज plus ये चीज, right? इसको मुझे कुछ नाम देना चाहिए. So we'll call this X, Y, and इसके आगे क्या? U से start with like U, V, W. ये क्या हो रहा है? W, X, Y, Z, that should be good enough. So W, X, Y, Z. Okay, so M times N. M is just X plus Z, and that times Y plus W. This will be basically X, Y plus, wait, and by the way X, Y is just okay, X, Y नहीं, अपने को दूसरा कुछ भी चाहिए था. So X, Y plus X, W. Yeah, so X, W भी नहीं है. Why is this happening to me? Okay, plus ZY plus ZW. Wait, but this इससे एक ना एक तो काम करना चाहिए था ना. Oh yeah, XZ जो रहेगा वो काम करेगा, ये डायरेक्टली काम नहीं करता है. Of course. Right, और ये चीज somehow AB plus CD में जानी चाहिए. Okay, अब अजीब लग रहा है ये, right? Think A और B में क्या importance है? ऐसा क्यों दिया आप लोगों ने? Y, AB plus CD. I don't know. क्लास में टाइम भी ऐसे करने का क्या पता, मुझे करने की इच्छा हो रही है. So X times Y का कोई importance है क्या? मतलब अपन एरिया वगैरह सोच सकते हैं. या बट एरिया में अपने को सपोज ये एंगल थीटा, तो क्या होना चाहिए? डायगोनल 1 डायगोनल 2 साइन ऑफ दिस गाय, राइट? और वो सब अपॉन 2, दैट विल बी टोटल एरिया. और टोटल एरिया का और तरीका है,
इनके टर्म्स में कोई तरीका है क्या? नहीं यार, नहीं पता मुझे. We can just do, अच्छा A और B के टर्म्स में रखना है, not adjacent sides. We want opposite sides. How is that even going to work? Yeah, A upon B का मतलब बनता है, but A times B, that is just weird. You know that WY is equal to XZ, but ये टर्म्स कहीं यहाँ पे आने ही नहीं वाली. So yeah, ये अजीब हो रहा है, बहुत अजीब हो रहा है इनफैक्ट. कुछ भी और यानी सर ये तो जीरो रन तो कैंसिल हो जाएगा वैसे भी. ए टाइम्स बी क्यू, क्या इंपॉर्टेंस है ए और बी का? इस अपने को सिर्फ लाइक ट्रिग्नोमेट्री से कर लेना चाहिए. ये हो सकता है कि वैसे ज़्यादा इजी जाए, राइट? ए टाइम्स बी. वेट, व्हाट्स द एंगल सब्टेंडेड बाय एंगल सब्टेंडेड बाय ये चीज़ क्या होगी? ये ऑन सर्कमफरेंस, तो उसका जो डबल रहेगा. सो सपोज आई डोंट नो, इसका इस एंगल को तुम ए बोल दो, इस एंगल को तुम बी बोल दो. बी से स्प्लिट वाला एंगल, सो ये वाला एंगल बी रहेगा, राइट? वेट, ओके, ये जो एंगल रहेगा ये भी सिमिलर रहने वाला है, राइट? या बिकॉज ये बी रहेगा एंड दिस विल बी ए. एंड ओके, सो फ्रॉम दैट व्हाट यू गेट, राइट? सो अपने को ए टाइम्स बी क्या ना सोचना है, और इनफैक्ट ऑल्सो सी टाइम्स डी क्या ना सोचना है. दिस इज वियर्ड. ओह हाँ, सो ए सेंटर पे 2a सबटेंड करेगा, दैट्स व्हाई लाइक 2a sin of, sorry, 2r sin of capital A, that will be its length. So a times b क्या हो जाएगा? In fact, it's just gonna be like 2r sin A sin B. और c times d, so c ये चीज़ है, d ये चीज़ है. c is subtending this angle, which is okay, we don't know exactly क्या है. It's gonna be this is same as that angle, in fact. Okay, right, this is not going good. Oh, okay. Wait. C is subtending this angle only. That's not even useful. Why? Why would you want to do that? Alright. ये angles क्या होंगे? I don't know. Seriously, how would we know? इसको कुछ तो बोल देते हैं ना. इसको बोल देते हैं C. So ये C है, और इसको मैं D बोल रहा हूँ. So this will be D as well. One thing is for sure कि B plus D is the same thing as C plus A. And यहाँ पे क्या हो रहा है? इसको मुझे थोड़ा सा अच्छा लिखना चाहिए, राइट? अपना मेन एम ये है कि अपने को ये चीज़ ढूंढनी है. स्टिल यार, डायगोनल्स का प्रोडक्ट थोड़ा सा अजीब है. थोड़ा सा मैं इसको बड़ा निकालता हूँ. एनी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. हाँ, ओके, सो वी नो कि ये जो है स्टार्ट विद दिस साइड, या फिर आई डोंट नो, कोई तो भी एक साइड स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट विद दिस साइड. सो सपोज ये जो है वो ए सबटेंड कर रहा है कहीं तो भी. एंगल ए थोड़ा अलग थी होगी. या राइट. सो लेट्स नॉट, सॉरी, यहाँ पे तो इनफैक्ट अपन ने ये नामकरण किया भी नहीं इस टाइप का. हमने सिर्फ साइड्स के बारे में कहा, फिर वो ज़्यादा मतलब बनता है वो चीज़ करने का. ए बी सी डी. तो ये एंगल सपोज ए है, सपोज ये एंगल बी है, एंड इन दैट केस ये एंगल बी होगा ऑफ कोर्स, एंड दिस विल आल्सो बी ए. ओके, और ये इसकी बात करते हैं. सो ये एंगल सी बोल देते हैं, देन दिस एंगल विल आल्सो बी सी, और इस एंगल में डी बोल देता हूँ. सो दिस एंगल विल आल्सो बी डी. सो सी प्लस डी, सॉरी सी प्लस डी प्लस, सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये जो रहेगा, राइट, ये जो सम है दिस इज गोइंग टू बी पाई. अंडरस्टैंडेबल? ओके, यस, बिकॉज हाँ, फॉर 2a plus 2b plus 2c वो 360 डिग्री रहेगा. सो इट्स ऑब्वियस, राइट? ये एंगल सेम हो रहे हैं, वट एवर, वी डोंट रियली केयर अबाउट दैट, यू थिंक. Okay, fine. So now what we want, just want 2r sin A sin B, that's going to be AB, and then CD क्या होगा? So CD is just
या ये एंगल कैसे प्रेजेंट कर रहा है C, एंड दैट्स व्हाई ओके 2r, oh by the way 2r का स्क्वायर होगा ना, या सो 4r स्क्वायर, देन यहाँ पे भी 4r स्क्वायर, so you just want 4r squared sine C sine D, and that's equal to m plus n, so m is just this side length. अच्छा ये एंगल कैसे प्रेजेंट कर रहा है D plus A, राइट, ओ या सो ये सर्कल के सेंटर पे कैसे प्रेजेंट कर रहा होगा, 2 times of that. So in fact, okay, it's going to be 4r squared and then sine of d plus a and then sine of a plus b. Yes, that's what it's going to be, right? So basically तुम बोल रहे हो कि sin a sin b plus यार इसे खेल क्यों रहा है, sin c sin d that is equal to sin d plus a and sin a plus b when a plus b plus c plus d is pi. Oh, isn't that like sine of a plus b ka square, right? Okay, think about it, right? It's cosine and stuff. Yeah, so इसको मैं 2 से multiply कर सकता हूँ. It will be like 1 minus 2 cosine of 2 times of a plus b, right? Right hand side का यहाँ पे लिखा मैंने. And then ये चीज़ क्या हो जाएगी, cosine of difference a minus b minus cosine of sum, so minus cosine of a plus b, और यहाँ पे आ जाएगा cosine of difference cosine of c minus d minus cosine of sum, so minus cosine of c plus d. But guess what, cosine a plus b plus cosine c plus d will be 0 because of the addition pi होता है, so तो गया, ये पूरा कुछ गया. And इसका क्या, we just want everything using a plus b, ये unexpected है, right? Yeah, ये कैसे हो गया? हाँ. Oh, you can write this thing as 2 cosine of, so इनका addition which would be okay, so a plus c एक जगह पे आएगा और b plus d, wait that's not good. अच्छा जो उल्टा रहेगा, so जब इसे subtraction रहेगा क्या मिलेगा मुझे, a plus d minus b plus c, but you know कि a plus d is equal to b plus c, so what does that mean कि दूसरा वाला just 1 हो जाएगा, right, दूसरा वाला सिर्फ 1 हो जाएगा और we will just get 2 cosine of the sum which is a plus c minus b plus d or whatever. और यहाँ पे क्या था, it was just sine squared of a plus b. How do I get that? Wait, okay, this was, it should have been c plus b or something, right? That would make more sense. Oh, sorry. Yeah, actually ऐसा ही होना चाहिए था. Oh god. Wait, नहीं, a और b and then d, that's unexpected. Wait, एक जगह पे मुझे a plus b मिल रहा है, इस जगह पे मुझे, अच्छा इसके तो मुझे b plus c मिलेगा ना. Oh, so ये गलत है, इस टाइप से लिखना ये सही नहीं है, इनफैक्ट, राइट. ये तो बहुत सारे अलग अलग तरह से लिख सकता हूँ in that case. Okay, right. So the thing is like sine of d plus a and then sine of c plus b, that's what you actually go for. So अगर इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ and then उसको ट्राई करूँ ब्रेक करने का, this will be cosine of the difference which is cosine of, so this will be think about it, difference में क्या आएगा, a plus d, wait, what, no, plus d, okay. यार ये क्या कैसा हो रहा है, हर जगह पे a plus b है और यहाँ पे a plus d है, not good. Okay, so difference में आएगा a plus d या फिर कहीं a और c है combined, नहीं है और okay, at least a minus b तो आ गया, and then plus, so यहाँ पे d minus c आ रहा है unfortunately instead of c minus d. यहाँ पे क्या आ रहा था, it was a, so difference क्या था अपन ने, नहीं डिफरेंस के टाइम तो अपने कुछ भी अच्छा लगा था, a plus d minus b plus c and then a plus d, oh this is not good, this is just not good, so ऐसे ही रहने दो इनफैक्ट.
क्या पता शायद से अपने कुछ गलत कर दिया हो। एनीवे द थिंग इज कि इसमें स्प्लिट करूंगा व्हाट यू गेट इज गेट डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। वन थिंग साइन ऑफ डी प्लस ए और सी प्लस डी लिखा है मैंने ऑफ कोर्स। सो कोसाइन ऑफ डिफरेंस विच इज looks good. Okay, plus sign of the addition. So a plus e plus c plus d, which is pi. So ये तो वैसे भी बनने वाला है. So this must be equal to that, right? Huh. That's unexpected. Cosine of a minus b plus c minus d. What is that? And that's somehow equal to ये चीज q. q ऐसा क्यों है? ये होना चाहिए था. क्या ये सही है? I don't know. बहुत suspicious लग रहा है ना? A plus d and then got a plus. यहाँ पे भी अपन सेम चीज कर सकते हैं इनफैक्ट। इसको मैं क्या इसको मैनेज कैसे करूँगा? वो साइन ऑफ a प्लस d माइनस b माइनस c, इसको मैं मैनेज ही कैसे करूँगा? पहली बात आई डोंट नो। और यहाँ पे मुझे 2 भी नहीं मिला ऊपर से। वाई? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में? ये सही है? डजंट फील लाइक दैट। मैंने सबको 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेक हो गया, सही हो गया, बट यहाँ पे नहीं हुआ, राइट? यहाँ पे अपने को 2 टर्म नहीं मिला, अपने को एक ही टर्म मिली। अगर मुझे समहाउ ये सेम चीज मिल जाती तो कितना अच्छा होता, राइट? यू नो कि मुझे a माइनस बी मिलता कैसे तो भी करके। a माइनस तो मुझे मिल रहा है, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट और एक्स्ट्रा चीजें मिल रही ना, व्हिच इज आई डोंट वांट दैट। एफिशिएंसी उसमें 2 था कहीं तो, आई डोंट नो यार। टॉलमीज थ्योरम यही था ना, mn इज इक्वल टू ab प्लस cd। व्हाट एल्स? सो फॉर एग्जांपल अगर एक स्क्वायर की बात करें देन दैट्स लाइक सेइंग स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा ना। सो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1। यस। ओके, ये यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं, मैंने गलत लिख दिया। दिस शुड हैव बीन ए सी प्लस बी डी। मैं क्या कर रहा हूँ आज? राइट, सो दिस वुड बी डिफरेंट। इंस्टेड यहाँ पे ए और सी आएगा एंड देन यहाँ पे बी और डी आएगा। हाँ, इंटरेस्टिंग। सो अब मैं इसको स्प्लिट करूंगा, इट विल बी लाइक 2 कोसाइन ऑफ डिफरेंस माइनस कोसाइन ऑफ सम। सो कोसाइन सम में क्या आएगा? a प्लस सी, बट a प्लस सी इसमें कहीं नहीं है ना, राइट? डिफरेंस में क्या आएगा? a माइनस सी, और यहाँ पे क्या आएगा? कोसाइन ऑफ डिफरेंस इज जस्ट यू अंडरस्टैंड, देन यू गॉट b प्लस d समहाउ। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? Yeah, that doesn't make any sense. Doesn't make any sense at all. कितना लंबा हो रहा है यार, ये सही नहीं है। हाउ कुड इट बी? अब तो वो भी नहीं, पहले हो रहा था। ये तो पूरा ही अजीब हो गया। अब लोग बी और डी का ही कंबाइन नहीं हो रहा है ना। राइट, ओके। a प्लस सी, दैट्स लाइक पाई माइनस, अच्छा नहीं, पाई माइनस दिस एंगल आई वाज थिंकिंग। वो तो काम ही नहीं करेगा। वापस करो। इस बार मैंने सही से लिखा है साइन ऑफ ए साइन ऑफ सी। सो a टाइम्स c के लिए, राइट, एंड देन साइन b साइन d इसके लिए m टाइम्स n, दैट्स जस्ट सो b प्लस a एंड देन यू गॉट, राइट, b प्लस c में डायगोनल को मैं रेफर कर रहा हूँ 2 बार, ये सही नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लाइक a प्लस b या तो फिर d प्लस c, सो इट शुड बी a प्लस b राइट देयर। ओके, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो। सो कोसाइन ऑफ डिफरेंस a माइनस c माइनस कोसाइन ऑफ सम विच इज a प्लस c। फिर यहाँ पे भी कोसाइन ऑफ डिफरेंस b माइनस d माइनस कोसाइन ऑफ सम b प्लस d। अनफॉर्चुनेटली a प्लस c और b प्लस d, या वो चीज काम नहीं करती डायरेक्टली, बट एनीवे। और यहाँ पे आ जाएगा कोसाइन ऑफ डिफरेंस विच इज, अच्छी बात है कैंसिल हो गया, लाइक d माइनस b एंड देन माइनस कोसाइन ऑफ सम विच इज, सो कोसाइन ऑफ सम में क्या आएगा? सो a 2 बार आया 2a प्लस d प्लस d। हाँ, ये क्या हो गया? इसका मतलब क्या होता है? आई डोंट नो। वेट, ओके, a प्लस b प्लस c प्लस d इज पाई, सो जस्ट a प्लस b प्लस d क्या होगा?
Isn't that like pi minus c basically? So pi minus c plus a. So it's more like cosine of d minus b minus cosine of a plus pi minus c, which is like cosine of d minus b plus cosine of a minus c, huh? Okay, interesting. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? लोग मैं पहले बोल रहा हूँ, मैंने कभी टॉलरेंस थ्योरम खुद से डिराइव नहीं किया, सो मेरा फर्स्ट टाइम है. ओके, ओह नाइस, ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया. सो इट्स लाइक सेइंग कि कोसाइन ऑफ a प्लस c प्लस कोसाइन ऑफ b प्लस d इज इक्वल टू 0, बट वी नो कि a प्लस c, ओह ऑफ कोर्स, a प्लस b प्लस c प्लस d इज 0, सो a प्लस c प्लस b प्लस d इज आल्सो, सॉरी, a प्लस a प्लस c प्लस d इज पाई, सो इनका एडिशन भी पाई होगा, एंड दैट्स व्हाई इट वर्क्स. सो यस, टॉलमीज थ्योरम डज वर्क. हम कैसे इसको अप्लाई करो और आंसर निकालो. राइट, लेट्स डू इट. मुझे सर इनफैक्ट इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि मैं कभी भूल ना जाऊँ कि कैसे डिराइव कर देते हैं. एनीवे, अब अपन कर सकते हैं. सो सी का क्या है? लेट दी साइड्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इन जीपी विद कॉमन रेशियो 2, राइट? वैल्यू ऑफ पीडी अपॉन एबी, राइट? सो थिंक अबाउट इट. डायगोनल्स का जो सम रहेगा, मतलब कि पीडी टाइम्स, सो बी क्या सी है बट डी नहीं है, राइट? और फिर क्या रहेगा? ए टाइम्स सी, सो बी डी टाइम्स ए सी इज इक्वल टू अपोजिट साइड, यानी कि ए बी टाइम्स सी डी प्लस ये वाले दो साइड, सो बी सी एंड देन डी ए, राइट? ये एक चीज जो कि हम बोल सकते हैं, राइट? आई थिंक ये काफी रहेगा. अगर काफी नहीं रहा तो मुझे क्या पता. एंड अब अपन क्या करेंगे कि यू नो, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस थिंग, oh, and we just want BD upon AB. Well, AC we kind of don't know. Okay, this is not looking good. Common ratio 2 बोला है. Wait, but अपने को BD और AC तो पता ही नहीं है, so how would even, अपने को उनका प्रोडक्ट पता है, yes, but you know, actually अपने को AC थोड़ी ना पता है. So how do we do this? Cyclic quadrilateral sides are in, PD is one of these diagonals. Sides ratio में है with the common ratio 2. Value of this thing is वेट, अगर साइड्स रेशियो में तो फिर एंगल्स के साइन वैल्यूज भी रेशियो में रहेंगे ना. और ये जो साइड्स है, लाइक इनका रेशियो, वेट, ओके, बी डी बी एम, वेट, मुझे पूरा करने की जरूरत नहीं थी. मुझे डायरेक्टली जस्ट यू नो, ओह कम ऑन, दिस वाज नॉट नाइस. सीरियसली. ठीक है, सो अलग चीज तरह से लिखा हुआ है. सो ए बी सी डी हमारे यू नो 4 साइड्स है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के. those are in GP, that's important. और अब तक चाहिए BD, सो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला, राइट? अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, A B C D, right? So AB is this, and then BC is actually AB A, and then this is BC, and this is CD. We just want BD, so ये वाली चीज, call this thing as M, right? And then AB is of course is this thing. So what we want is M upon A. How do we figure that out? राइट, ऑफ कोर्स. अब अपन क्या करेंगे, इसको सिर्फ ए आर और ये सब पुट कर दूंगा. सो ए आर स्क्वायर, एंड बाय द वे आर इज जस्ट 2, सो इट्स गोना बी 2a एंड देन 4a एंड देन 8a. नाइस. अब अपने को क्या चाहिए? अपने को सिर्फ m की वैल्यू चाहिए, राइट? मोर लाइक m अपॉन a क्या होगा वो चाहिए अपने को, राइट? हाँ, थिंक अबाउट इट. इन दोनों का साइन वैल्यू जो रहेगी वो नेगेटिव रहेगी दूसरे के, राइट? यस, ओके. साइन वैल्यू दूसरे के नेगेटिव है. यू कैन जस्ट यूज कोसाइन रूल ऑन बोथ ऑफ दीज ट्रायंगल. तो कोसाइन वैल्यूज इस तरह से कट जाए, होप करो ऐसा होता है. सो अपने को ये टॉलरेंस की जरूरत भी नहीं पड़ रही. इनफैक्ट मुझे लगा पड़ेगी, जो भी उतना ही अच्छी प्रैक्टिस होगी मेरी वापस रिवाइज करने. ठीक है, जो भी है. एंड देन इज गॉट m स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 64a square. Think product is like 8a square, so minus 16a square cosine of whatever this angle is called, this thing as x, इसको y बोल दो, cosine x.
Right, and then once again m square is equal to 4a का 16a square, and then plus 4a square, and then minus 16. Ooh, that's nice. इनका product भी in fact wait, oh wow, look at that, 8 8, perfect. Minus a square cosine of y, but cosine y is just negative cosine x, so ये ऐसा हो जाएगा. just इसको add कर देता हूँ. So 2m square is equal to, in addition of course, which is 64 plus 16 plus 4 plus 1, यानी कि क्या हो जाएगा, 85 a square, right? Yeah, so m upon a का square is just 85 upon 2, so square root of 85 upon 2, that should be the answer. और वो कहाँ पर है? नहीं है इसमें तो है ही नहीं. Wait, what? How can that be? ये कैसे हो सकता है कि इसमें कोई ना? This is not good at all. ये कैसे हो गया? राइट, ये रेशियो में भी तो कॉमन रेशियो ऑफ 2. I did it right, I did it correctly. उसी ऑर्डर में कि किस ऑर्डर में? इसी ऑर्डर में ना. So a b और फिर b c और फिर तो मैं b d का चाहिए. m, yes, कोसाइन रूल यूज किया मैंने, फिर को ऐड किया. It should have worked. So 2m square is equal to, in subtraction which is like 20, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे क्या चलेगा, 84 plus 1 यानी कि 85 a square. So square root of 85 upon 2, but where is it? नहीं, इसमें तो दिख ही नहीं रहा है. So square root of 85 is like 5 times 85, just 5 times of 17. नहीं है यहाँ पे कोई भी. Right, इसमें क्यों नहीं है यहाँ पे? 2 square root 5 जो भी है, छोड़ देते इसको. अपन ऑलरेडी इस पे काफी सारा टाइम स्पेंड कर चुके, राइट? ए बी ऑलरेडी तुम्हें दिया हुआ था, एंड देन सॉनेट बी डी, राइट, और ये सी रहेगा, एंड देन ऑफ कोर्स दिस हैज टू बी डी. तो ये अपॉन ये, हाउ प्रॉब्लमेटिक कुड दिस इवन बी? जस्ट इनका एडिशन पाई है, दैट यू नो फॉर श्योर. सो जस्ट नेगेटिव रहेगी, राइट? सो जस्ट go add कर दो, you will get the thing. What's the problem? यहाँ पे क्या है, 8 is -2 times up. So yeah, काम तो करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहा है? क्वेश्चन गलत दिया है, फिर आंसर गलत दिया है, whatever. Next. हाँ, टी का करते हैं. Let A, B, C be in AP and these are in HP. If A is not equal to C, then A is to C is. What? A, B, C be in AP, right? And A square, B square, C squared be in HP. Okay. If A is not equal to C, then A is to C must be. Oh, come on, seriously. अच्छा, ये HP में है. Think about it. थोड़ा सा उसको अलग तरह से लिखा मैं. I'll just say कि 1 upon A is, I don't know, capital A. So this will be like A squared, B squared, C squared in AP basically. And 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C in AP. Right. So this is like 2 upon B is equal to 1 upon A plus 1 upon C, but we also know that 2b square is equal to a square plus c square. हाँ, इस अपने को करना है कुछ भी, right? If a is not equal to c, then a is to c must be. Okay. So b तो इनफैक्ट, अच्छा एक काम करो, इसको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर डालते, ये भी काम कर जाए. So this is, wait, it's like a plus c का then upon ac. Okay. शायद काम करे. Let's just try this thing. So और एक काम करो ना, a to c जो रेशियो जो भी रहेगा उसको k बोल देते हैं. This is like 1 upon c times 1 upon k plus 1, and this will be c squared times k squared plus 1. Okay, तो इसको स्क्वायर करके अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं. So this will be 8 is equal to 1 upon k plus 1 square, and that means of k squared plus 1. अपने को सिर्फ अब k ढूंढना है somehow. Right.
So this is like 8k square is equal to, so ये क्या हो जाएगा 1 plus 2k plus k square times 1 plus k squared. Okay, not liking it. This is going to be plus 2k plus k squared, and then you got k squared times this thing, so plus k squared plus 2k cube plus k power 4. Okay, तो जो अपना इक्वेशन बनेगा k power 4. Wait, okay, ये सिमेट्रिक बनने वाला है. This is really nice. Okay, and then you got 2, so ये उधर जाके कर देगा minus 6k squared, and then plus 2k plus 1. Of course, just divide करो k squared and get this thing done. So this will be k plus 1 upon k का square. अपने पास भी k plus 1, yeah, of course, minus 2, and then that plus ये सारी चीज, okay, 2 times of k plus 1 upon k minus 6 is equal to 0, so minus 6 minus 2 is like minus 8. 8 को 4 and 2, of course, so plus 4 minus 2, k plus 1 upon k plus 4, yeah, it can work. What about minus 2? Okay, minus 2 तभी होता है जब k should be minus 1, sorry, it's equal to 2, right? So k plus 1 upon k is equal to 2. हाँ, वो तो काम ही नहीं करेगा because it won't work really. Yeah, because तब क्या हो जाएगा, k is equal to 1, and then this doesn't make any sense. A is not equal to c, so k plus 1 upon k should be minus 4. मतलब कि k squared minus 4k plus 1 has to be 0. हाँ, ये तो कर सकते हैं, like minus b. फिर डायरेक्टली करूँगा k minus 2 का square is equal to minus 1 plus 2 square, which is plus 4, of course, which is just 3. So k is just 2 plus minus करो 3. Yeah. So s, I think. Wait, 2 plus और ये कैसे हो गया? A is just, हाँ? It should have been 2 minus square root 3, you know? ये क्या हो? ऐसा क्यों किया तुमने? A is to c. या फिर 2 plus square root or something like that. But नहीं, कुछ और ही कर दिया इन लोगों ने. Oh, okay, wait. So, nahi, look, 2 plus square root 3, and then these are just reciprocals, of course. But square root 3 minus 2 is a number that's less than, yeah, it's negative. Why would they take this as the ratio? Wait, मैंने इसमें गलत किया ना? और क्या possibility? मैंने गलत किया, वही possibility है, right? Square root 3. K can be positive. Yeah, I think. Look, this should be. Oh, it should be plus. It should be plus. Yeah. Okay. Minus 2 plus. ठीक है, तो फिर square root 3 minus 2, that can be a possibility. So s, yeah, d का s. Next one. So next question. Third. Match the entries in column 1 representing equations of various families of curves with their orthogonal trajectories given in column 2. Okay, orthogonal trajectories. What is that? Right. So जब भी तुम्हारे wait, what? Yeah, जब भी तुम्हारे tangents perpendicular थे, वही है ना, ये कुछ और है. I don't know. So for example, x cube plus, wait, what? What is an orthogonal trajectory? बस एक कर्व जो कि इससे ऑर्थोगोनल हो, ऐसा बोल रहे हो? समथिंग लाइक दैट? नहीं, ऐसे पॉइंट्स जहाँ से टेंजेंट्स जो है वो परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ नहीं. क्या है ये? 2x minus y squared is equal to a squared इसकी ऑर्थोगोनल. हर जगह भी x y वगैरह में लिखे ऑर्थोगोनल ट्रांजिशंस, या फिर जैसे अपने को इसी को मॉडिफाई करना है एंड देन समहाउ रोटेशन वगैरह के बाद में लिखना है. नहीं, what is happening? Orthogonal trajectory. Seriously, I don't know. What does that even mean? या फिर ऐसी जस्ट ट्रैजेक्टरी जो कि इसे ऑर्थोगोनल कट करती है, राइट? सो लाइक दैट. एक्स वाई इक्वल टू सी क्यों बोला है फिर? अच्छा, और ए का इसमें नाम निशान नहीं है ना, सो तुमने जस्ट ए का कन्वर्ट कर दिया into this thing. Okay,
नो आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों अपने को फर्क पड़ रहा है इस बारे में. व्हाट डज दैट मीन? मोस्ट लाइकली ऐसी ट्रेजेक्टरीज जो कि इसको ऑर्थोगोनली कट करती हो, राइट? ओके, थिंक सो. सो एक्स नॉट वाई नॉट सपोज तुम एक पॉइंट लेते हो जो कि किससे बैठता है, तो दूसरी ट्रेजेक्टरी पे भी बैठता है. क्या हो जाएगा इसमें? हो जाएगा 2x, so the tangent will just be 2x x naught minus y naught is equal to a square. So जो slope है that will just be 2x naught upon y naught. अच्छा, दूसरी इसमें लेकिन ना इसमें क्या होगा? इसमें होगा जिसमें 1/2 है उधर भेज रहा हूँ, 2c हो जाएगा वहाँ पे जो भी है. मुझे सिर्फ स्लोप का वैसे भी फिगर करनी है. सो यस, x and then you got y naught, okay, plus y naught, sorry, plus x naught times y, right? And that will just be 2c or whatever. So minus y naught upon x naught. Okay. Oh, so ये इसमें काम कर सकता है, right? So b में काम करेगा. So it's orthogonal to that wherever it cuts it. So third का b, I mean third के a का b, sorry, b का a ऐसा बोला चाहिए. So b का p, okay, a का क्या होगा? So मुझे 2x चाहिए है इसी तरह से. What about this guy? What about this guy first? So हाँ नहीं, इसमें कब जब कट होगा देन x नॉट y नॉट यहाँ पे भी बने रहेंगे. that's not good. That's not good. लोग यहाँ पे हर जगह पे तो लेकिन, और यहाँ पे क्यूब क्यों डाल दिया इन लोगों ने? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू ए के. सीरियसली वाई? दिस वी डोंट नो. बी का तो मैं डायरेक्टली बोल नहीं सकता फिर. अच्छा, इसका देखते हैं. सॉरी, बी का नहीं, सी का. बी का नहीं बोल सकता डायरेक्टली अभी के लिए, पता नहीं. राइट. सो ए के लिए जस्ट वांट 2x x नॉट वगैरह. सो ए के लिए तुम्हारा जो स्लोप है दैट इज 2x नॉट अपॉन y नॉट, राइट? या व्हाट अबाउट ये कर्व? तो अपन ऑलरेडी चेक कर चुके हैं. व्हाट अबाउट दिस कर्व? सो इसमें होगा x, या फिर वो 2 तो आने वाला है, इसको उधर भेज दो. सो wait, it's like 1 upon x minus 1 upon y is equal to c or something. So isn't that like, okay, so 1 upon x minus 1 upon y is equal to c, right? इसको डिफरेंशिएट कर डालते हैं ना. So like negative 1 upon x square, which is x of course, and then plus 1 upon y square, dy upon dx is equal to 0. So एक पर्टिकुलर पॉइंट पे x नॉट y नॉट पे हमारा जो स्लोप रहने वाला है that is going to be, so negative 1 upon x naught upon 1 upon, so ये भी negative आएगा, negative 1 upon y naught squared, which is of course just y naught squared upon x naught. ये कहाँ पर मिलता है? इसमें तो नहीं मिल रहा है मुझे of course. What about this? So y squared equal to cx. It's like y squared upon x is equal to c. Once again just differentiate and get the thing done. So this will be 2y upon x and times slope, and then minus y squared upon x squared is equal to 0. तो x तो गया इनफैक्ट, देखो yes, और ये एक y भी गया आई थिंक. So the slope is just, you know, y naught upon 2x naught. क्या ये था? नहीं, इसमें उल्टा था ना. Okay, just keep going. फिर ये वाले ट्रेजेक्टरी, so x y squared is equal to c. once again डिफरेंशिएट करें तो मुझे क्या मिलता है? just get, you know, 2yx slope plus, so that is like y squared is equal to 0 whatever. ये y गया, you don't care about that. So slope will just be negative y. ये भी तो सेम आ रहा है. How does it make sense? ये भी तो सेम आ रहा है. Yeah. Wait, what? Yeah, ये भी तो सेम आ रहा है इनफैक्ट. So negative y naught upon 2x, so just उसका अपोजिट. Wait, इनमें से कोई भी काम नहीं किया. How does that make sense? ये तो it should have worked. क्यों काम नहीं किया ये? राइट, ये तो सही लग रहा है मुझे. एंड देन m should just be this thing, but ये और ये दोनों सेम चीज दे रहे हैं काइंड ऑफ.
या तो मुझे ये टाइप का स्लोप कब मिलेगा, यू नो, 2x0 y0। Think about it यार। अपन ने सारे के सारे ट्राई कर लिए तो एक भी काम नहीं कर रहा है इसमें। इज दिस इवन करेक्ट और नॉट? और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें उल्टा आ रहा है, राइट? Slope will be, you know, 2x x naught upon y naught. So sorry, 2x naught upon y naught, negative, yes। इसमें उल्टे आ रहे हैं अपने सारे स्लोप्स, मतलब इसमें y naught upon, ऑफ कोर्स यार मुझे उल्टे ही तो चाहिए। ओ वेट, बट फिर अपन पहले p में क्या कहता, लाइक ओके, p में मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दूंगा वट एवर। Slope was just, you know, so x naught plus y naught something. So negative x naught upon y naught was the slope. तो अपने को y naught upon x naught slope चाहिए रहेगा for this. So इसका क्या होगा, इसका होगा, ओके मुझे समझ में क्या गलत किया, ये ऐसा नहीं चाहिए, राइट? ओके नाउ वी कैन डू दिस थिंग। सो ओके अब मुझे समझ रहा है क्या हो रहा है। सो इसके लिए इनफैक्ट मुझे स्लोप लगेगा माइनस y naught अपॉन 2x naught। वो किस में आता है? सो वो आता है लास्ट वाले इसमें, राइट? b। सो b a का t, and then b के लिए you will need y naught upon x naught which comes, हाँ कहीं तो नहीं दिख रहा है मुझे, where is y naught upon x naught? एक लीनियर इक्वेशन में रहेगा, yes, but that's not here, it's not here। q में क्या हुआ था? q में it was just, you know, like 1 upon y minus 1 upon x is some kind of constant or whatever, so differentiate किया, so negative 1 upon y squared times slope। oh इसमें स्क्वायर्स आ रहे हैं, oh so ये इससे मैच करेगा, राइट? और इसमें यहाँ पे भी स्क्वायर रहेगा, so whatever। okay this should be squared actually, yes। okay ये सही है, and it should match with that, but you know ये वाला कैसे मैच करने वाला है, that इसमें जो स्लोप आया था that was just x naught upon y naught, मतलब अपने को इनफैक्ट नेगेटिव स्लोप ऐसे ही आया था क्या? b के लिए स्लोप था, it should have been positive x naught upon y naught, नेगेटिव क्यों डाले? ओके तो अपने को नेगेटिव y naught upon x naught लगने वाला है, यस। और वो तो अपने को दिखा ही नहीं, नेगेटिव y naught upon x naught कहीं नहीं दिखा है अपने को, वो एक लीनियर इक्वेशन में रहेगा, बट लीनियर इक्वेशन यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है। सो नाउ व्हाट, it doesn't look good, yeah it doesn't look good, want to y naught upon x naught, इसमें तो कहीं भी नहीं दिख रहा यार, चेक करो सारे, पहले वाले इसमें ये स्लोप आया था, इसमें स्क्वायर्स वगैरह थे, काम नहीं करेगा, सॉरी क्यू वाले इसमें, एंड देन आर में ये चीज थी, सो ये भी काम नहीं कर रहा है, ओके दिस इज सो नॉट गुड यार। बी के लिए क्या होगा, देन एस में क्या हो रहा था, as it was, so 2yx times m, and then you got this got derivative, so यार ये तो सही नहीं हुआ, ये जो दोनों टाइप के थे उसमें अपने को ऐसे प्लस माइनस y नॉट अपॉन 2x नॉट आ गए, अपने को y नॉट अपॉन x नॉट चाहिए, सिर्फ y नॉट अपॉन x नॉट, ये सब नहीं। x ओके इसमें क्या था वैसे, इसमें था x नॉट अपॉन y नॉट वाज द थिंग, राइट? और अपने को क्या चाहिए था, अपने को चाहिए y नॉट अपॉन x नॉट, नॉट x नॉट अपॉन y नॉट। सो अब क्या, नहीं वेट, ओके सॉरी द थिंग इज कि इसमें क्या आएगा, एक्स वाई नॉट प्लस एक्स नॉट वाई इज इक्वल टू समथिंग, ओके माइनस वाई नॉट अपॉन एक्स नॉट, दैट विल बी द थिंग, और इसमें अपने को एक्स नॉट अपॉन वाई नॉट मिला था, सो यस दैट्स द थिंग इट। हाँ पहले भी तो यही किया था, कुछ भी गलत किया, मुझे लगा मैंने गलत किया, तो मैंने गलत नहीं किया, राइट? और फिर सी का क्या होगा, सो इसको मैं डी इसको मैं एस बोलूंगा ना, एंड फॉर सी तो ये चीज, हाँ इसके लिए अपने को क्या सोल्व मिला था,
देख लेते ना. सो लाइक 2x0 अपॉन नेगेटिव माइनस लाइक नेगेटिव 2x0 अपॉन y0. तो अपने को y0 अपॉन 2x0 चाहिए विच इज गोइंग टू बी हियर, मतलब कि इस वाले के लिए. सो इट शुड बी r एंड देन फाइनली फॉर t. सो t डायरेक्टली नहीं कर सकते ना. सो वी जस्ट डिफरेंशिएट दिस थिंग. सो क्या हो जाएगा 3x0 squared plus 3y0 squared slope is equal to 0. So slope it will just be negative x0 squared upon y0 squared. और अपने को ऑलरेडी पता है कि ये जो अलग जो ये जो चीज़ थी उसके लिए स्लोप था y0 square upon x0 square. So that's just मल्टीप्लाई करो नेगेटिव 1 मिलता है. And that's why राइट. और ये कौन सा वाला था? इट वॉज दिस थिंग q. सो इसका q होगा. नेक्स्ट let's go to fourth. Let k be a non-zero positive rational number. दो बार नंबर लिखा. Okay, x square plus 2kx plus k square plus 1 is equal to 0. Then रूट सारे नेगेटिव इमेजिनरी रूट हो गए. इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? इसका डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 4 और व्हाटएवर. सो k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर माइनस नेगेटिव है, हर बार नेगेटिव है इनफैक्ट. राइट. इसका मतलब ऐसा k प्लस आयोटा एंड k माइनस आयोटा. सो दिस इज प्रीटी मच क्लियर कि दिस इज x प्लस k प्लस आयोटा एंड x plus k minus iota is equal to 0. So yeah, roots are just complex. लोग imaginary बोलते हैं, but it should be complex technically. Okay, so a का r. ये अच्छा है, अपन डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकते हैं हर जगह पे. सो सिमिलरली यहाँ पे k, so x plus k times x plus 1 रियल रूट्स है. डिस्टिंक्ट हो सकते हैं नहीं सकते, डिपेंड्स. oh so k is a positive rational number. so दोनों के दोनों नेगेटिव रहने वाले हैं. So roots are negative. Fourth का q, sorry b का q. c का देखता हूँ kx स्क्वायर प्लस तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? वेट 3 कैसे आ गया यहाँ पे? ये तो अजीब है. लाइक x स्क्वायर प्लस रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन दैट वी कैन से फॉर श्योर, क्योंकि वो c अपॉन a विल जस्ट बी -1 in this case. So इसका s हो जाएगा c का s. अपन कुछ कह नहीं सकते डिस्क्रिमिनेंट के बारे में. सो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 9 प्लस राइट. ओके, कह सकते हैं कुछ तो भी. ये कह सकते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, मतलब कि दोनों रूट्स रियल होने वाले हैं. राइट. क्या अपन ये कह सकते हैं कि रूट्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है और समथिंग? इनका जो एडिशन नहीं यार, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहने वाला है, अपन ऑलरेडी देख चुके ना. Okay, next d kx square plus 2 times of k plus. look इसको मल्टीप्लाई करो k times k plus 2. नहीं, काम नहीं करेगा. कि कर भी सकता है. एक्चुअली करेगा. सो राइट इट एज k plus kx plus. सो a k ऑलरेडी निकाल सकता है. k plus 2 times of x plus k plus 2. सो दिख ही रहा है कि x plus 1 is a factor. and then otherwise k x पर रहेगा ना, kx plus k plus 2 राइट. ये दूसरा. सो एक तो -1 है एंड दूसरा है माइनस k plus 2 विच इज ऑल्सो नेगेटिव. सो दोनों नेगेटिव है एंड दोनों रियल भी है. and k is a positive rational number, so in fact these are rational. so wait, अरे यार मैंने हर जगह पे वो स्किप क्यों किया फिर? रूट्स आर नेगेटिव, सो क्यू तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ. एंड रैशनल भी है. सो एंड बाय द वे ओके, ये जो था इसमें रैशनल लिखा था मैंने, और इसमें रैशनल थे राइट. यस. सो इसमें भी पी बोल सकता हूँ, और इसमें नहीं, पता नहीं अपने को ये डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअल में कुछ रहा होगा अच्छा या फिर नहीं, वी डोंट नो. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ. So dx upon sin power 4x plus cosine power 4x is like लंबा है बट करते हैं. So dx upon 1 minus 2s square c square ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो. So d2x बोल दूंगा मैं डायरेक्टली अपॉन 2 minus sin squared of 2x राइट. ओके,
क्या इसको अपन फैक्टराइज कर सकते हैं? आई थिंक ओके या, बट वो काम नहीं करेगा बिकॉज उफ 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 उफ, काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। Or you can just take this out, or cosec square you can use that. So this will be negative directly, so switch कर दो ना, negative cosec square of 2x, and then you got d2x or whatever upon, so यहाँ से बाहर निकला 2 cosec square x minus 1, but अपने को तो कुछ tan, सॉरी cot बचा रहेगा, so like 2 cot square of 2x plus 2, अपन ने switch किया था right, so it will actually be negative, so negative 2 cot square of 2x minus 2, and then यहाँ पे क्या आएगा plus 1 of course, right? Hardly, yeah, this should make sense. So then we can, right, so इसको cot of 2x को let's just call this thing as, I don't know, u, then this will be integration of du upon, so ये नेगेटिव तो, so ये नेगेटिव यहाँ पे कंज्यूम हो गया और ये स्टिल नेगेटिव ही है, so नेगेटिव बाहर निकालो तो u स्क्वायर आ जाएगा, this will just be -1, right? नहीं, ये -+1, right? अब क्या, अब तो इसको डायरेक्टली तुम स्प्लिट कर सकते हो, लाइक 1/2 du upon u square plus 1/2, इसको तो इसमें भी इंटीग्रेशन, अच्छा इसको पार्शियल फ्रैक्शन में करना पड़ेगा, लाइक u plus 1/√2 iota and then u minus 1/√2 iota, इनका जो डिफरेंस रहने वाला है इसमें भी लाइक √2 iota, तो उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, सो देन यू कैन डू दिस थिंग। ओके, और इसको अपन ने जब स्प्लिट किया, व्हाट यू गेट, राइट, सो ये चीज माइनस ये चीज रहेगी ऊपर, एंड बिकॉज ऑफ दैट पहले अपने को राइट, सो 1/u minus 1/√2 iota minus 1/u plus 1/√2 iota, एंड देन du। आई नो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि मैं इमेजिनरी नंबर्स यूज कर रहा हूँ, बट हैंग ऑन, ये सही आंसर देता है। यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ मेमोनिक, क्योंकि एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स ऐसे डायरेक्टली नहीं करते रहते, बट इन दिस केस अपन कर सकते हैं, तब कुछ बुरा नहीं है। सो नेचुरल लॉग ऑफ, यू नो, the usual, like √2u minus iota upon √2 plus √2u plus iota, right? Which of course is like, if मैं डायरेक्टली मिल सकता ना, मैंने तक और किया ही क्यों, जान दो क्या फर्क पड़ रहा है, tan इनवर्स वगैरह 2 √2, right, it's going to be tan inverse of 1/√2u, think of it like that, yeah, you can think of it like that, okay, it's going to be tan inverse of 1/√2u, and then that thing plus some kind of constant or whatever. Oof. Oh wait, no, actually negative आएगा ना ऊपर, right, should be negative, yeah, और वो 2 भी बाहर आएगा, so ये 2 बाहर आने के बाद जैसे कट जाएगा, right, और वो नेगेटिव वजह से ये हो जाएगा, और आयोटा तो आएगा ही, so वो भी कट गया, so this should be the thing, does this make sense? I think it should, अल्दो जो अपने को यूजुअली मिलता है वो नहीं है, इसलिए और मिल गया, हाँ, ये नेगेटिव बाहर आया, थोड़ा सा अजीब हो रहा है, राइट, सो राइट, ऑफ कोर्स, सो दिस इज लाइक नेगेटिव, हाँ इसलिए ऐसा हुआ, नेगेटिव 1/√2 cot इनवर्स, मुझे नॉर्मली करना चाहिए था, जो भी है, मतलब मैंने अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर से इन्वॉल्व करते हुए इंटीग्रेशन सीखा, सो यू नो अब वो नॉर्मली में मजा नहीं आता। एनीवे द थिंग इज, फिर इसमें π/2 एक्स्ट्रा, एक π/2 एक्स्ट्रा खींच लो, एंड देन दिस जस्ट बिकम्स 1/√2, मैंने नेगेटिव डाला, सॉरी, इसमें नेगेटिव π/2 एक्स्ट्रा खींच लो, एंड देन इट जस्ट बिकम्स नेगेटिव, और यहाँ पे चलेगा tan इनवर्स ऑफ √2u plus some kind of constant or whatever, so that will be this 2x for you, what, oh so u was just, you know, क्या था u, it was cot of 2x, right? Yes, so negative 1/√2, इसमें हर जगह पे इन लोगों ने प्लस ही ओमिट कर दिया, whatever, then you got tan inverse of √2 upon, right, so upon tan of 2x, ठीक है, इसलिए उन लोगों ने इसको स्विच किया, एंड इन डूइंग दैट उन लोगों ने यहाँ पे नेगेटिव साइन हटा दी, अंडरस्टैंडेबल, सो यस, ये उससे मैच हो जाएगा, सो a का p, go to b now,
sin 2x अपॉन 3 प्लस 4 कोसाइन x का क्यूब. क्यूब यू सेड. इसका डेरिवेटिव तो अलग है. 2 साइन कोसाइन और फिर ऊपर का साइन कंज्यूम कर लो फॉर राइटिंग कोसाइन कंप्लीटली और फिर यूज सब्स्टिट्यूशन. या इट्स एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉट दैट हार्ड. सो इंटीग्रेशन ऑफ कोई और मेथड भी कर सकते थे, यू नो. नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके. सो 2 इंटीग्रेशन, ओ एक्चुअली शुड नेगेटिव. एंड देन फिर क्या हो जाएगा, सी डी सी अपॉन ये सारी गंदी चीज. 3 प्लस 4c का स्क्वायर. अब क्या इसको u बोल देते, सो u इज इक्वल टू 3 प्लस 4c और वट एवर. तो इसके लिए मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा 4/2 और 4 को अंदर भेज दो एंड इट विल वर्क. या फिर मुझे यहाँ पे भी लगे ना, तो ठीक है, वो बाद में देख लूंगा. सो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ c du अपॉन u स्क्वायर. अब c क्या होता है, c इज जस्ट u minus 3/4. उसे पुट कर दिस लाइक -1/8 एंड देन यू गॉट u minus 3 upon u square du. Yes, okay, which is -1/8. जो पहला इंटीग्रल is just 1/2, so it's natural log of u. फिर -3 upon u square का इंटीग्रेशन, so this will be plus 3 upon u and then that thing plus minus constant whatever. Yes, and then by the way u is just cosine of x, so right, -1/8 natural log of cosine x plus 3 secant x. Oh, no, sorry. U is not. It's supposed to be something else. Okay. Wait, इसमें कहीं क्यों नहीं है ऐसा? I do something wrong. Oh, okay. Cube, not square. मैं आज क्या कर रहा हूँ यार? ठीक है, फिर ये गलत हो गया अपना. It's not going to be like this. Instead यहाँ पे आएगा 1/u square. पहले तो नेगेटिव अंदर डालो ना. So -1/u square. उसका इंटीग्रेशन just 1/u. And then +3/u cube. उसका इंटीग्रेशन होगा -3/2 and then upon u squared, right? Yes, that should be the thing. Okay, and then u is just 3 plus 4 cosine. Let's put that as 1/8. तो इसको सिंप्लीफाई और कर सकते थे ना. Yes, you could have just done this thing. 2u minus 3/2u squared. फिर यहाँ पे 16 ले जाओ डायरेक्टली, क्या चल रहा है. And then 2u is like okay 6 plus 8c, तो फिर 8c plus 3/16 times of 3 plus 4c का square. Is that, yes, that is this thing. So q, it's gonna match q. Let's go to c now. C. So addition of 1 minus sin x का square root upon 1 plus cosine x e power ये सब गंदी सी चीज dx. ठीक है, is equal to p of x. p of x is right. 1 minus sin x like okay, so x minus 5.4 होगा, इसका पड़ता है तो बहुत ही गंदा हो जाएगा. या फिर इसको मैसेज करो sin x minus cosine x sin x upon 2 minus cosine x upon 2 उसका स्क्वायर, तो वो ब्रेक हो जाएगा अपने आप. हाँ, और अज्यूम करो कि वो पॉजिटिव वर्जन देगा. assumption, yeah. और नीचे आ जाएगा 2 cosine square of x upon 2 or whatever. Yeah, फिर ये जाएगा e power negative x upon 2 and then dx. Not that good looking, unfortunately. Oh, okay, it's actually doable. Not that bad. 1/2 का मतलब 1/2 यूज करके यहाँ पे dx/2 लिख दो. So dx/2 it will be e power negative x/2. इनफैक्ट एक काम करो, या वो नेगेटिव यूज करने के लिए काम करते हैं. तो ये तो ऑलरेडी नेगेटिव x/2 है. अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव पुट कर दूं then you can write like that. So अपन सब कुछ complete in form negative x/2 लिख सकते हैं in that case. So e power negative x/2 and this will just be sine upon cosine squares like yeah whatever s upon c square both for negative x/2 and then ये हो जाएगा plus 1/c. So isn't that like tan x and secant x यहाँ पे, and this is just secant x. So इसका डेरिवेटिव जो है that's going to be this thing. So of course e power with respect to x/2 of course negative x/2 of course. So इसका डेरिवेटिव यहाँ पे आता है. So yeah, upon cosine of x/2 negative x/2, that will be the answer. So f of x is really just secant of negative x/2 or secant x/2 because क्या फर्क पड़ रहा है. So c का r. नेक्स्ट d करता हूँ. d is this integral
So dx upon square root of yeah, so I knew this कि कभी ना कभी ऐसे कुछ तक पूछेगा, तो मैंने उसके लिए पूरा प्रॉपर लिख के रखा, राइट. सो dx upon square root 2 square root q का इंटीग्रल कैसे करते हैं, just to 1 upon square root a, in this case it's going to be negative 1, natural log of so x dash, which is just x plus b upon 2a. So in this case it's going to be like minus 3 upon 4, so x minus 3 upon 4, and then square root of the quadratic, no sorry, square root of a, which is iota in this case, and then plus square root of the quadratic, so plus square root of negative, wait, what, square root of, oh god, it should be minus 2 over there. तो यहाँ पे 2 आयोटा, स्क्वायर 2 आयोटा आएगा, राइट. और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ ए आइए चाहिए अपने को, तो फिर स्क्वायर रूट 2 टाइम्स आयोटा, एंड देन आफ्टर दैट वी जस्ट वांट, क्या कर रहा था मैं, राइट, द क्वाड्रेटिक, सो स्क्वायर रूट ऑफ ये क्वाड्रेटिक जस्ट माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4. अब इसको बस सिर्फ कन्वर्ट करना है. लोग इसमें कहीं भी ये गंदी चीज़ें नहीं आ रही, राइट. हाँ, तो ऐसा कुछ भी आएगा. अच्छा, so it's like 1 upon square root 2 sin inverse of something. What is that something basically? Look, 1 upon square root 2 आ गया, या आयोटा वैसे ही कटने वाला है, so don't worry about this. You just want the argument of this thing and then you are done, right? So plus some constant, तो वो modulus part भी हट जाने वाला है, and then you just want the argument. So yeah, argument कैसे निकालूंगा मैं, ये थीटा है, it's just square root a and then x dash over here, और ये जो चीज़ है that's going to be square root q over here, right? Yes, okay, right. So square करो, add करो, right? Oh okay, it's not just square, yeah, square root of negative है, फिर आ जाएगा यहाँ पे, right? It's like square root of negative a, and then इसको x dash का square लिख दो यार, क्या जा रहा है, ये ऑलरेडी अपन ax dash square plus c dash हमेशा लिखते ही है. So the thing is कि hypotenuse हमारा क्या होने वाला है, hypotenuse will just be c dash का square root, of course, because yeah. So what we are actually looking for is so like sine inverse of square root of negative a x dash square upon c dash, और ये इतना hard नहीं है. Sine inverse of square root a क्या है, a is just negative 2, so ये जगह 2 and then x dash which we already calculated like that, so right, it's going to be x minus 3/4 का square upon c dash, right. So c dash is just कहाँ पे चला गया था quadratic, ये चीज़, it's going to be 4 minus like b squared upon 4a, yes, yeah, like b squared upon 4a, that's the thing. Yes, that's spot correct. So right, b square is like 9 and that's 0.4a, which is so minus 8, which is upon 8, of course. So multiply by 8 on both sides, it's like sine inverse of square root, ऊपर 8 भेज दो, 16, ठीक है ना, 4x minus 3 का square whatever upon क्या जगह ये 32 plus 9, right, which is 41. So 4x minus 3 upon square root 41, उसका sine inverse, yes. So fx is just going to be this thing, so as expected, yes, it's the answer. Next, the function y set defined by the equation xy minus natural log y is equal to 1 satisfies x y double dash plus y dash squared plus value of k is okay. So xy minus natural log y plus, okay, that's equal to 1 something. Value of k is, so वो 1 के equal, ये important है कि नहीं है, अच्छा ये सब x के डेरिवेटिव लिए तुमने हजारों, कितने डेरिवेटिव ले लिए, बहुत सारे हो गए यहाँ पे. So it satisfies this thing, ठीक है ना. फिर in that case just put
I don't know, put x as 1 upon y minus natural. नहीं, बहुत बुरा हो जाएगा. Doing that is not worth it, right? It's not worth it. I'm thinking कि मैं somehow इसको dx upon dy अगर वो सब मैं लिख दूँ, right? That's one way to think about it, right? और यदि just divide by y squared, तो यहाँ पे 1 upon y जगह पे कुछ अलग ही आ जाएगा. That won't work because plus 1 upon y squared और फिर अगर नेगेटिव होता then maybe, but इस टाइप से तो नहीं. ऐसे तो कुछ हो जाएगा. Uh, yeah, think. So y is equal to 1 plus natural log of y. ये कितना लंबा है, ये मुझे नहीं करने की इच्छा हो रही. वैल्यू ऑफ k is वैसे तुम बोल रहे हो कि ये जो चीज़ है एक्स वाई वाई डबल डैश, हाँ ये सारी चीज़ अपॉन वाई वाई डैश, ये चीज़ ढूंढो, राइट? अच्छा, अपॉन वाई वाई डैश एक्चुअली में होगा क्या, एक्स एंड देन यू गॉट ये सारी चीज़ वाई डबल डैश अपॉन वाई डैश, और यहाँ पे आ जाएगा वाई डैश डिवाइड वाई डैश अपॉन वाई. दैट्स नाइस. और या ये सब अपॉन, अच्छा ये सब अपॉन कुछ भी नहीं, दैट्स इक्वल टू नेगेटिव के. सो अगर मैं इसको उधर भेज दूँ और फिर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ somehow. So this will be like natural log of y dash plus natural log of y is equal to minus k natural log of x and then plus some kind of constant or whatever. So that's like saying y dash is equal to ax power some kind of constant negative k. Yes. Okay, तो ये कैसे ढूंढो y dash, ये अजीब हो गया, राइट? अब क्या इसके आगे क्या होगा? You could try to just integrate this forward. It's like saying कि y squared upon 2 is yeah, ये कुछ हो रहा है ना, ये तो कुछ से कुछ हो रहा है. Right. No, it's not going to work like this क्योंकि ये तो अजीब हो जाएगा. It's dy upon this. I get it कि तुम उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो and then it should be the same as that, but वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. It's basically saying कि y जो है square root of some polynomial function of x, which makes no sense. ऐसा नहीं हो सकता. You know that's not going to work. तो q, ऐसा q यहाँ पे दिख रहा है हमें कि वो काम करेगा. Negative k upon x continuation of x, of course, and plus some kind of constant, and that's why this thing, right? Okay, so I think y squared upon 2 is equal to ax power negative k plus 1 upon 1 minus k जो भी है, and then plus some kind of constant or whatever. So yeah, oof. But we know that x, so natural log of y, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो तो मुझे क्या मिलने वाला है? इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट मिलता है y माइनस 1 अपॉन y डैश, या ओ ये रिलेटिव मैं भूल गया. सो प्लस xy डैश इज इक्वल टू 0 और समथिंग. नॉट गुड यार, ये क्या है? तो बहुत गंदा सा है. So y squared minus 1 plus y squared minus 1 y dash is equal to 0. यहाँ से तो y dash कुछ और ही आ रहा है, like y squared upon y squared minus 1 ऐसा कुछ तो भी. What is this? It's y dash. Okay, that's gonna be y squared. दिमाग खराब हो रहा है मेरा कि कुछ वैल्यूज चेक करते हैं, शायद से 1 है, शायद से 3 है. 1 तो अपने को दिख रहा है यार, अजीब हो जाएगा क्योंकि ऐसा हो गया लाइक एक्स वाई डैश इज इक्वल टू ए काइंड ऑफ कांस्टेंट. तुम ये बोल रहे हो बट एक्स वाई इज ऑलरेडी जस्ट 1 प्लस नेचुरल ऑफ वाई एंड देन एक्स वाई माइनस नेचुरल ऑफ वाई होता तो फिर काम पड़ता. बट दैट्स नॉट हियर.
मतलब y dash is like ये चीज y dash upon y dash whatever whatever ये नेचुरल लॉग y जो है ना ये बहुत घटिया सा लग रहा है मुझे यहाँ पे। इसको मुझे नहीं चाहिए। सो y dash इज इक्वल टू y squared upon minus y squared ये चीज पुट कर देते हैं यहाँ पे। Yeah. So this is like y dash which is y cube upon minus y squared is equal to ax power negative k. But how? How is this going to convert to that? नहीं, सब हो ही नहीं सकता। Unless okay, अगर मैं इसमें नेचुरल लॉग अगर मैं e पावर कर दूं दोनों दोनों साइड, then it still won't work यार, still won't work। यहाँ पे मुझे नेचुरल लॉग वाली y वाली टर्म तो मिली ही नहीं, क्यों नहीं मिली मुझे? क्या गलत किया? कुछ गलत तो किया और लग नहीं रहा है। Then why is that not working? यहाँ पे कोई कांस्टेंट वगैरह भी नहीं है, सब कुछ सही जा रहा था एंड देन somehow it doesn't work। आह maybe like ये ज़्यादा बेटर रहेगा to use। oh so natural log y ये सब सिंपलीफाई करो ना, डायरेक्टली नेचुरल लॉग y कुछ तो पुट कर देते हैं नहीं 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 नहीं, that's no way of doing it, which is not good। ये क्या घटिया सी चीज हो गई यहाँ पे। come on, it's not nice। क्या आप क्या, ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। अपने गैस करना पड़ेगा इस टाइप से तो, and I don't want to do that। just put x is equal to 1 plus h log y upon y and this thing and see what happens, maybe, right? You could do that। so अगर मैं ऐसा करता हूँ then it's like this is equal to a and then this should happen for all values of y by the way। so 1 plus natural log of y upon y to the power of negative k। okay, y dash जो है that's not okay, x is that thing, isn't that like division by dx upon dy, and what's dx upon dy? So x was just this thing। oh it's like okay, y dx upon dy is equal to ax power negative k। और you could also just say कि अच्छा ठीक है y को in terms of x लिख सकता हूँ क्या मैं, because वो करने से मुझे क्या फायदा होगा यार, लाइक वो करने से मुझे फायदा होने ही थोड़ने वाला है। टिल नाउ ओके द बेस्ट थिंग इज तुम डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करने का ट्राई करो, पर उससे अपने को इन्फॉर्मेशन का लॉस हो रहा है, गेन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वन इंपॉर्टेंट है। ये अगर या so natural log y is just okay, but y dash is problematic, right? you wrote x in terms of y, okay, dx upon dy क्या होगा in that case? It's gonna be negative 1 upon y squared plus इसका derivative which is like 1 upon y। oh ये तो कैंसिल हो गया, बहुत ही अच्छा। हाँ ओके ओके नाइस। और उसके बाद में क्या होगा, नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ y अपॉन y स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है, सो जस्ट वो चीज आप पुट कर दो। सो इट्स लाइक सेइंग नेगेटिव ओ एंड y इज लाइक y स्क्वायर, सो नेगेटिव natural log y upon y is equal to a times ये सारी चीज 1 plus natural log of y upon y की power negative k for some kind of constant k, some kind of constant a, right? okay, this is horrible। yeah okay, not good, not good। ये चीज कैसे काम कर सकती है भला? अगर यहाँ पे 1 नहीं होता तो फिर काम करता, राइट? बट है, यहाँ पे 1 है। नाउ व्हाट? 1 plus natural log y upon y, इसका जो डेरिवेटिव रहेगा जस्ट बी ऑफ कोर्स इट्स negative 1 upon y squared और plus 1 upon y squared and then negative 1 upon y squared natural log of y। so ये तो just ऐसा हो जाएगा एंड वो चीज़ यहाँ पे पुट करके कुछ तो अजीब मिल रहा है। दिस डजंट मेक एनी सेंस। This should happen for all values of y। How can that happen? So if k is, I don't know, say 1,
then this is like ये cancel हो जाएगा and then just get natural log of y some kind of constant plus हाँ नहीं ये काम नहीं करेगा यार seeking ये काम करेगा it should be an identity it should work for all of you know uh, yeah just want to give up because ये कुछ ही कुछ हो रहा है यहाँ पे okay I think I should see you in the next video bye